Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Mohammed Zahid Jamil, moderating today's session, today's webinar on thyroid disorders. On the behalf of Pakistan Endocrine Society, I welcome you all on this series of webinars on thyroid disorders. Let me introduce you the speakers of today. First one is Dr. Matiullah Khan. He is consultant endocrinologist at Shifa Hospital, Lahore. And second, Hospital Islamabad. Shifa Hospital, Islamabad. And second one is Dr. Amina, consultant endocrinologist, Jinnah Hospital, Lahore. Welcome, Dr. Matiullah Khan. I now hand over the session to Dr. Matiullah Khan to start his presentation, and the audience may ask questions, and they should type their question in the question answer session, and will be replied accordingly after the end of presentation. Thank you. Thank you so much, Dr. Zahid. Thanks to PES for giving me this opportunity to have a talk on interpretation of TFTs, and more focus will be on the atypical, the discordant thyroid function test. I'm Dr. Matiullah Khan. I'm currently practicing at Shifa International Hospital as consultant endocrinologist and assistant professor of endocrinology at Shifa College of Medicine. The thyroid function tests. We know that the population reference ranges for thyroid hormones are relatively broad. This is in contrast to the narrow individual variations of thyroid hormone in normal subjects. Modest changes in thyroid hormone are associated with marked excursions of TSH. And this change in thyroid hormone is sufficient to render a subject hypo or hyperthyroidism, while this may not be associated with numerically abnormal T4 or T3. And this we call as the subclinical hypo or subclinical hyperthyroidism. We know that the TSH is the frontline screening test for thyroid dysfunction. We order it a lot, and it is very beneficial test as a screening test. But in some cases, if we order TSH as a screening alone, it will result in misdiagnosis. This is one important thing. Along with that, we also should know that the changes in binding proteins will affect the total T4 and total T3, and we should keep that in mind whenever we are ordering. A very simple approach, what test to order and in what place what to order. So this is important that we should remember this thing, what labs we have in Pakistan. We don't have the equilibrium dialysis, which is the gold standard for free T4 or free T3. We don't have that. When we don't have that, then we should rely on the next best step. So during pregnancy, never order a free T4. That's my advice to all the fellows. Never order a free T4. Why? Because free T4 done by the Pakistani analog assays, and these are the best labs, the Shifa or Aga Khan or Shaukat Khanum, but the analog assays will result in a falsely low free T4. While we know that in the first trimester, actually the T4 is rising, so the free T4 should be rising. This rises only in the equilibrium dialysis, which is not available in Pakistan. What to do now? So for a pregnant patient, we know there is a predictable increase in the thyroid binding globulin, which is due to the predictable increase in the estrogen. We know from 7 weeks onward, there is a 5% increase per week of this total binding globulin. So we should just add that to our reference range, which is of the non-pregnant reference range. आसान लफ्जों में इतना बता दूं कि वही नॉन प्रेग्नेंट रेफरेंस रेंज उठाना है हमने, उसको हमने अपर रेंज को मल्टीप्लाई करना है बाय अ सर्टेन नंबर. अगर वो 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम करना चाहे तो 1.5 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हम लेते हैं. आसान लफ्जों में ये याद रखें. या बहुत डिटेल में जाना चाहते हो, सो फ्रॉम 7 वीक्स ऑनवर्ड आप हर वीक के हिसाब से 5% बढ़ाते जाते हो. 7 वीक्स मींस 5% ज्यादा करना है उसको.
8 weeks means 10%, 9 weeks means 15%, 10 weeks means 20%. ये 5 बढ़ाते जाएंगे, 16 weeks में वो static हो जाएगा, वही पर चलता रहेगा आगे. This is about the total T4 and total T3. And similarly, we do the TSH test as well. So whenever I'm suspecting in a pregnant patient कि मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं कि उनको हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, तो TSH, T4, T3, और उस T4 और T3 को मैं अपर लिमिट को 1.5 या 1.3 या 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिपेंडिंग कि किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मैं देख रहा हूं. और TSH को आपने थोड़ा लो करवाना है, यानी कि 4.5 जो TSH है ना, वो 4.0 तक आ जाएगा, जो अपर लिमिट इसका होगा. लोअर लिमिट जो है वो 0.5 से शुरू होता है नॉर्मली, तो ये 0.2 या 0.1 से शुरू होगा नॉर्मल प्रेग्नेंट का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नो अबाउट दिस नॉर्मल रेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू से कि ये एबनॉर्मल टेस्ट है या नॉर्मल टेस्ट. एक प्रेग्नेंट हाइपोथायरॉइड है, उसमें कौन सा टेस्ट करवाना है? जस्ट डू द TSH एंड टोटल T4. नो नीड ऑफ डूइंग T3. आउटसाइड प्रेगनेंसी क्या करना है? For a hyperthyroid or a thyrotoxicosis case, just do TSH, free T4 and total T3. One more important thing, outside pregnancy भी जो है वो free T3 कभी नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो गलत आएगा, बहुत मुश्किल टेस्ट होता है. Very small portion is actually the free T3 जो कि मेजर नहीं हो पाता है टेस्ट में, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. We are not talking about the dynamic equilibrium, we are talking about the electrochemical chemoluminescence assays. ECLI जो शिफा में, आगा खान में होता है, जो एनालॉग मेथड्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं. बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग कि बुक्स में लिखा है फ्री T4 अच्छा है तो हमने वो मान ली. फ्री T4 तो चलो मैं मानता हूं कि वो अच्छा है, फ्री T3 अच्छा नहीं है, उसकी बजाय आप T3 करते हो. इफ यू go for the American Thyroid Association guidelines, clear cut it is written कि do the T3, total T3, free T4 and TSH in someone who is not pregnant, and pregnancy में आप TSH, T4 and T3. अगेन हाइपोथायरॉइड में T3 का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हाइपोथायरॉइड आउटसाइड प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं? TSH, free T4. नाउ वंस वी आर क्लियर विद इट, वी फर्दर मूव ऑन. सो थायराइड प्रोफाइल करा लो, ये एक और वर्ड है जो कि आपको नहीं यूज करना चाहिए. देयर इज नथिंग कॉल्ड थायराइड प्रोफाइल. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए करना क्या चाह रहे हो. आप अकेले TSH करवाना चाहते हो, TSH फ्री T4 हाइपोथायरॉइड के केस में, TSH फ्री T4 टोटल T3 हाइपरथायरॉइड के केस में, या फिर TSH T4 T3 एक प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए. तो थायराइड फंक्शन टेस्ट को आपने बताना होगा कि मैं ये करना चाह रहा हूं, ताकि वो इजी हो जाए. थायराइड प्रोफाइल का वर्ड यूज करना अवॉइड करें. And teach your medicine जो ये आपके colleagues है as well about this thing. Now, thyroid profile या thyroid function tests are usually straightforward. With a combination of thyroid hormone and TSH measurement, you actually confirm euthyroidism, thyrotoxicosis, and hypothyroidism. And that is actually consistent with the clinical status. Sometimes it is discordant. Discordant either किस तरह डिस्कॉर्डेंट हो सकता है? इधर इट इज नॉट फिटिंग विद द क्लिनिकल पिक्चर, और इट इज द अनयूजुअल नॉन फिजियोलॉजिक पैटर्न व्हिच इज कॉल्ड द फनी TFTs. In these cases, we should reconsider the clinical picture, alterations in normal physiology, intercurrent non-thyroidal illnesses, or medication uses like, for example, amiodarone या even thyroxine पे है वो, lab assay issues, lab artifacts. हमारे पाकिस्तान में तो इससे भी ऊपर जो है वो गलत लैब्स, वो तो अलग ही बात है. बट इवन अगर लैब अच्छी लैब भी हो, शिफा शौकत खान आगा खान भी हो, फिर भी ऐसे के इश्यूज हो सकते हैं. एंड देन सम रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. नाउ इंटरप्रेटिंग डिस्कॉर्डेंट TFTs रिक्वायर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, the action, the thyroid hormone action at cellular or tissue level, and diverse array of congenital and acquired conditions with different patterns. Establishing the correct diagnosis is critical. It's very important. And this is based on the careful clinical assessment combined with this lab, radiological, and sometimes genetic testing. If you fail to adapt such structured approach, you may result in incorrect diagnosis and inappropriate management. Whenever a patient comes, we start with the history and examination. What information to consider? Are there signs or symptoms of thyroid dysfunction? Any recent and reliable thyroid function test? So history of previous thyroid dysfunction, or is there a family history of thyroid
problems? Is the patient on any multivitamins that contains biotin, which is very important? Is the patient taking any other drug like amiodarone? Is the patient on some chemotherapy like TKIs? So all these are important. History of thyroid hormone replacement. Is the patient on thyroxine? How is the iodine exposure? Then underlying medical conditions, which includes pregnancy, liver, renal diseases, some acute illnesses, or psychiatric illnesses. So are these TFTs discrepant? And then is there any imaging available or not? All these information, based on all these information, we can divide it into, the pitfalls can be divided into pre-laboratory, laboratory, and post-laboratory. So we can be trapped because in the pre-laboratory time, we were not paying sufficient attention to the clinical context. तो प्री लेबोरेटरी में एज को नहीं देखा गया कि एज यानी कि 70 इयर्स का था तो TSH7 वाज एक्चुअली नॉर्मल फॉर दैट पेशेंट, बट हमने उसको एबनॉर्मल लिया, या न्यूनेटल एज को हमने नहीं देखा। साथ में प्रेगनेंसी चेंजेस जो अभी मैंने इतनी सारी बातें की कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन, वो कंसिडरेशन दिमाग में नहीं रखी और हमने कहा कि ये तो एबनॉर्मल है। ये जो TSH वैसे ही थोड़ा कम हो जाना था प्रेगनेंसी में, 0.2 नॉर्मल होना था, या फिर जेस्टेशनल ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस को हमने एबनॉर्मल हाइपरथायरॉयडिज्म बना दिया। ये सब लेबोरेटरी से पहले ही वो वाले मसाइल है जो हम कर लेते हैं। पेशेंट थायरॉक्सिन पे है, उस हिसाब से आपने कंसिडर नहीं किया चीजों को। कुछ और ऐसी कंफाउंडिंग मेडिकेशंस थी, उनको नहीं कंसिडर किया गया। कुछ नॉन थायरॉयडल इलनेस चल रहा था, पेशेंट सिक था, आपको उस वक्त चेक ही नहीं करना चाहिए था, थायराइड फंक्शन टेस्ट वो किया गया था। सो ऑल दीज pitfalls will occur at the pre-laboratory level. Then laboratory के level पे जो है वो you are failing to recognize the limitations of the commonly used assays. Assay interference due to many reasons. Now इसमें दो तरह के जो है वो याद रखिएगा assays है। कुछ तो सीमेंस जितने भी हमारे लैब्स है, SIEMENS जो सीमेंस वाले लैब मशीनरी से बनते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इट्रोफाइल एंटीबॉडीज भी उसी में होती है, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी, ह्यूमन एंटी एनिमल एंटीबॉडी भी उसी में होता है, ह्यूमन एंटी माउस एंटीबॉडीज के इश्यूज भी उसी में होते हैं। बट जो हमारे शिफा में यूज होता है, रॉश का या आगा खान में जो यूज होता है, उसमें यूजुअली ये थोड़ा कम है। बट फिर भी दो तीन ऐसी चीजें जैसे बायोटिन है ना, वो फिर भी वो प्रॉब्लम करता रहता है इसमें। सो लैब ऐसे इंटरफेरेंसेस हमने दिमाग में रखने हैं। वी शुड टॉक टू आवर लेबोरेटरी chemical pathologist, like we have a very good person over here, so we ask them कि ये इसमें लैब एरर का चांस है या नहीं है, ये जरा देख ले। तो वो चीज आपको लैब से दोबारा से देखनी है। बट पाकिस्तान में तो फिर एक और मसला ये भी है कि आवे का आवा ही बिगड़ा है कि वो लैब्स ही हमारे माशाल्लाह ऐसे, द मोस्ट कॉमन लैब एरर दैट यू, द मोस्ट कॉमन थायराइड फंक्शन टेस्ट दैट यू विल सी इज अ लैब एरर एक्चुअली। तो फ्री T4 थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, TSH नॉर्मल होगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होंगी। तो पहली चीज हमेशा हम ये देखते होते हैं कि इसमें कोई लैब एरर तो नहीं है, और वो लैब टोटली खराब लेबोरेटरी है या फिर वैसे ही ऐसे इंटरफेरेंस हो सकता था। एंड देन उसके बाद वी गो टू द पोस्ट लेबोरेटरी। पोस्ट लेबोरेटरी में कुछ ऐसी बीमारियां होती है, वेरी रेयरली वी सी दीज थिंग्स लाइक TSH ओमास, TSH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, या फिर TSH जो रेजिस्टेंस हो रही है, थायराइड हार्मोन की जो रेजिस्टेंस हो रही है उसकी वजह से। सो ड्यू टू दिस, और देन देयर कैन आल्सो बी डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड हार्मोन ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म। Okay, now let's talk about the thyroid function test patterns. We have around 7 patterns that we should understand very well to know about the discordant TFTs and to know about the interpretation very well. First of all, we should know about the normal. The TSH is in the reference range, the free T4 and total T3 are in the reference range. Whenever we have a suppressed or a low TSH with a raised free T4 and T3, this is called thyrotoxicosis. माइंड यू, यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाइपरथायरॉयडिज्म फौरन ना बोला करें। थायरोटॉक्सिकोसिस इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट जस्ट टेल्स कि देयर इज अ रेज्ड T4 and T3 but a low TSH. When it is due to the overproduction of thyroid hormone by the Graves' disease or by the toxic adenoma or toxic nodular goiter, only then you call that as a hyperthyroidism. Otherwise, if it is due to thyroiditis or any drug like thyroxine, you don't call it as a hyperthyroidism. Rather, you should call that patient as a thyrotoxicosis
a non-hyperthyroid thyrotoxicosis. So thyrotoxicosis are divided into two. One are the hyperthyroidism thyrotoxicosis, the other are the non-hyperthyroidism thyrotoxicosis. दोनों में बड़ा रिमार्केबल फर्क है और दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए थायराइड अपटेक स्कैन, द टेक्नीशियम अपटेक स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो ये क्लियर है, समझ आ जाता है हमें कि T4 और T3 ज्यादा है और TSH कम है। और एक और बात, सिर्फ फ्री T4 हो सकता है नॉर्मल हो, TSH कम हो, बट वी शुड डू द T3 एज वेल बिकॉज देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड T3 टॉक्सिकोसिस। Now, next one is hypothyroidism. Hypothyroidism is when the free T4 is low and TSH is high. I told you there is no need of doing T3 in a person in whom you are suspecting hypothyroid. Just free T4 करवाया, वो low आया है, TSH raised आया है। इसमें एक टेक्निकल थोड़ा सा एक पॉइंट है, मैं रेज करना चाहता हूँ। वो शुरू में भी मैंने थोड़ा इशारा दिया था कि फ्री T4 अभी नॉर्मल रेंज में भी हो ना, थोड़ा सा वो कम होना शुरू हो जाता है, देयर इज अ मार्क्ड एक्सकर्जन ऑफ द TSH और बहुत हाई हो जाता है। वो फौरन 20, 30, 40 तक पहुंच जाएगा जब फ्री T4 अपने जो रेफरेंस रेंज है उससे डाउन आना शुरू हो जाए। अगर किसी का फ्री T4 रेफरेंस रेंज से डाउन हो जाए, फ्री T4 नॉर्मल से कम हो जाए, यानी कि 0.8 पे नॉर्मल होता है ना, 0.8 से लेकर 1.7 तक, अगर किसी का 0.6 हो जाए या 0.5 हो जाए फ्री T4, यू एक्सपेक्ट कि TSH कम से कम 50, 60, 70, 100 तक पहुंचे। अगर उसका अभी भी TSH 10-15 के आसपास हो ना, एक स्टडी के मुताबिक 20 से कम, एक के मुताबिक 10 से कम, कहने का मतलब है 10, 15, 20 के आसपास अभी भी हो, इट इज जनरली नॉट अ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, माइंड यू। ये माइल्ड सा TSH एलिवेशन विद अ वेरी लो फ्री T4, दिस कुड बी अ सेंट्रल। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, मगर ये फर्ज करें ये एक ऐसा सिनारियो हो जाता है, हालांकि देखें ना TSH तो इसमें अच्छा खासा बढ़ा हुआ है ना, बट फ्री T4 कम है। बट उसमें मैंने एक टेक्निकल पॉइंट ये डाला कि TSH कितना बढ़ा हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 50, 60, 70 या 100 तक जाए, ये तो अभी भी 15 पे खड़ा है। ये 10-15 का TSH with a low free T4 is a common scenario in a central hypothyroidism. We will discuss in the question answer as well if you have any question about it as well. ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि यार अगर किसी का TSH लो है या सप्रेस्ड है बट फ्री T4 नॉर्मल है, T3 नॉर्मल है, what is this scenario? This is generally called a subclinical hyperthyroidism. But remember, हमने पेशेंट से हिस्ट्री ली, उन्होंने बताया नहीं भाई मैं तो साथ में न्यूमरकजोल गोली पे हूं। So it's a very common scenario that we see कि पेशेंट को आपने न्यूमरकजोल शुरू किया, TSH अभी भी सप्रेस्ड ही है बट फ्री T4 जो पहले 4 या 5 था वो नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मल रेंज में आ गया। इट्स वेरी कॉमन। The TSH takes a lot of time, sometimes 3 months, sometimes 6 months to go up and become normal. So what you follow initially whenever you start a numercazole is you just follow the free T4 and total T3, not the TSH. और उसी free T4 and T3 के हिसाब से आप न्यूमरकजोल के डोज को एडजस्ट करते हो, कम करते हो। अगर मैंने 6 गोलियां शुरू की न्यूमरकजोल on someone who had a free T4 of say for example 4.0, 4.5, तो अगले विजिट में उसका फ्री T4 नॉर्मल होता है, तो मैं 6 गोलियों से डायरेक्टली 3 गोलियों या 2 गोलियों पे आऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा TSH तो अभी भी सप्रेस्ड है। ठीक है जी। तो ये एक साथ में मैं ऑब्वियसली TFT इंटरप्रिटेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्लिनिकली रेलेवेंट बातें हैं। तो सब क्लिनिकल हाइपर या समवन who is recently started on numercazole has still a low TSH but the free T4 is normalized. Someone on steroids on dopamine, स्टेरॉइड और डोपामिन डायरेक्टली जाते हैं TRH को कम करते हैं जिसकी वजह से TSH कम होता है और आपको सिर्फ TSH ही लो नजर आता है, फ्री T4 और T3 नॉर्मल होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समवन हु इज सिक, again non-thyroidal illness, will have a low TSH, maybe free T4 normal हो और T3 usually उसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट सिनारियो, here you can see TSH ज्यादा यानी कि 9-10 का है और फ्री T4 नॉर्मल है, दिस वी कॉल द सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। बट इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक पेशेंट जो कि अभी अभी नॉन थायरॉयडल इलनेस से रिकवर हुआ, रिकवरी फेज के दौरान थोड़ा सा TSH बढ़ जाता है और फिर वो वापस नॉर्मलाइज होता है। ये भी तो हो सकता है कि फ्री T4 वगैरह नॉर्मल है, TSH थोड़ा रेज्ड है और TSH वो हाइपोथायरॉइड का केस था और वो अभी थायरोक्सिन ले रहा था बट वो मेल एब्जॉर्ब हो रहा था, या फिर वो पोर कंप्लायंस की वजह से अभी
पिछले दिनों में जरा ज्यादा उन्होंने थायरोक्सिन लेनी शुरू कर दी थी, तो फ्री T4 नॉर्मलाइज हुआ था, बट TSH को तो टाइम लगता है, महीना या 6 हफ्ते लगते हैं बिकॉज ऑफ दी हाफ लाइफ कि उसको नॉर्मलाइज होने में। तो TSH अभी भी 10-11 का है और फ्री T4 नॉर्मल है। सो एनीवन ऑन thyroxine who is hypothyroid, we do ask this question, कि how is the compliance? So ये सिनारियो भी हो गया। Now let's go to even difficult scenarios. The sixth one, फ्री T4 भी लो है और TSH भी या नॉर्मल है या लो है, सब कुछ लो है, इसका मतलब है। In this thing we should know about two important things, either non-thyroidal illness or central hypothyroidism. This is the two things that I remembered, but ऐसे interference जाहिर है हर बार हो सकता है। And then the one which I will be explaining in much more detail will be this scenario. TSH का भी ज्यादा होना और फ्री T4 T3 का भी ज्यादा होना, यानी कि सब कुछ थोड़ा सा ज्यादा है नॉर्मल से। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज ऑब्वियसली कि वो वाले दो रेयर बीमारियां तो नहीं है, जो पिट्यूटरी एडिनोमा TSHोमा है वो भी TSH बढ़ गया तो फ्री T4 भी बढ़ गया, T3 भी बढ़ गया। और दूसरा थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस, ठीक है जी, तो उसके पीछे TSH भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस है ना, आगे वो काम ही नहीं कर रहा है तो TSH बढ़ गया। ये दो तो रेयर है, but we have a lot of things in between. Let's talk about them. So before going there, again, I will be emphasizing on this point that there will be misdiagnosis with exclusive TSH screening. So in conditions like, for example, मैंने अभी discuss किया था thyroid toxicosis treatment पे TSH may remain suppressed even when the thyroid hormone concentration is normalized. TSH ऐसे interferences में non-thyroidal illness में, central hypothyroid में, या फिर TSH secreting pituitary adenoma या resistance thyroid hormone में, इन सब में सिर्फ TSH करवाओगे तो गलत होगा। A stepwise approach to resolving discordant या anomalous thyroid function test. It is divided into 3 ways. We are resolving this issue जिसमें raised free T4 और T3 था और नॉन सप्रेस्ड या नॉर्मल या रेज्ड TSH है। तो दोनों चीजें जब रेज्ड है, the first thing that we will be reviewing is the clinical context, then investigate the lab interferences, and in the last we will consider the specific conditions. So first of all, how is the clinical context? How is the thyroid status? Is the patient hypothyroid, euthyroid, or hyperthyroid? Is there any intercurrent illness, the non-thyroidal illness causing this problem, or acute psychiatric issues? In the clinical context, we also should remember about the medications used, amidron, biotin, or thyroxine, even heparin as well. ये सारे examples है clinical context के. I don't want to go into these details. Drugs, बहुत सारे drugs हो सकते हैं, iodine, amidron, lithium, TKIs, immune modulators, and all that. A quick word about non-thyroidal illness. It is actually the absence of an intrinsic abnormality of the hypothalamic pituitary adrenal of thyroid axis. It is a secondary adaptive change. We don't even know कि इसका फायदा है, नुकसान है, क्या है, but what changes occur within 24 hours, T3 सबसे पहले कम होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद TSH भी कम होना शुरू हो जाता है, और अगर बहुत severe disease हो तो T4 भी कम होता है, and this low T4 correlates with less favorable outcome in non-thyroidal illness. In turn T3 कम होता है तो reverse T3 बढ़ जाता है, वो हमारे पास obviously measure नहीं होता है. This is how you know. The precise mechanism is under debate. During recovery वापस thyroid hormone सब normalize हो जाते हैं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा TSH remains elevated. I'm quickly going on these things because time भी थोड़ा कम है, but एक patient जो कि LT4 थेरेपी के ऊपर हो, anomalous thyroid function test कैसे हो सकते हैं? एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजिक वेरिएंट है कि फ्री T4 मामूली सा थोड़ा सा रेज्ड हो और बाकी TSH नॉर्मलाइज हो जाए. You can just ignore this scenario. Especially रॉश में जो है वो फ्री T4 थोड़ा सा वो ओवर एस्टिमेट कर देता है, यानी कि 1.7 जो हमने अपर रेंज रखा हुआ है 1.9 और 2 तक भी जा सकता है नॉर्मली. एक तो ये बात है, और दूसरा इसकी वजह एक डिक्रीज डीहाइड्रेशन वजह भी होती है कि फ्री T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाते है, तो वो थोड़ा सा इसलिए फ्री T4 थोड़ा सा रेज्ड होता है. दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिक वेरिएंट. अदर वेरिएंट्स जिसमें TSH रेज्ड है और फ्री T4 या तो नॉर्मल है या लो है, वो क्या सिनारियो? ठीक है, सो लो नॉर्मल और फ्री T4 थोड़ा सा कम और TSH ज्यादा, यानी कि
थायरॉक्सिन हार्मोन पे तो है मगर उसका फायदा नहीं हुआ। उसका फायदा तो तभी होना था जब टीएसएच नॉर्मलाइज हो जाता और फ्री टी4 नॉर्मलाइज हो जाता। अब फ्री टी4 का कम होना, टीएसएच का ज्यादा होना, पेशेंट इज स्टिल हाइपोथायराइड। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? फर्स्ट रीजन इज मैल एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट एम्प्टी स्टमक पे नहीं ले रहे, सो 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट लेना है। कोई फूड उसके साथ ले रहा है, लाइक मिल्क ले रहा है उसके साथ, कोई ड्रग्स ले रहा है इंक्लूडिंग अ पीपीआई, इंक्लूडिंग अ आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट, यू हैव टू स्पेस अपार्ट एटलीस्ट 4 आवर्स। तो ये टेक्निकली ये बातें भी हमने सब करनी है प्रैक्टिकली क्लिनिक में। नंबर 2, मैल एब्जॉर्प्शन, सीलिएक डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें हम मैल एब्जॉर्प्शन के लिए जब भी सस्पेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप पूछते हो लैक्टोज इंटॉलरेंस का और सीलिएक के स्क्रीनिंग भी करते हो। बट साथ साथ आप पे एक और तरीका ये होता है कि किसी के डोज 400-500 mcg तक पहुंच गया फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो हम थायरॉक्सिन को एडमिनिस्टर करके एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ और ऐसे ड्रग्स है जो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं या एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, और कुछ ड्रग्स है जो कि थायराइड हार्मोन की जो बाइंडिंग है वो इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन है या ओसीपीज है। खैर मगर फ्री टी4 करवाओगे तो वो तो नॉर्मलाइज आ जाना चाहिए। नाउ कुछ और एनॉमलस पैटर्न्स ऐसे जो एलटी4 के ऊपर थे, अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ एकदम से। तो वो क्यों होता है? बिकॉज समटाइम्स पेशेंट थायरोक्सिन से थायरोनॉम पे शिफ्ट हुआ, थायरोनॉम से एल्ट्रोक्सिन पे शिफ्ट हुआ। सो ब्रांड आपने चेंज यूजुअली नहीं करना होता है, बिकॉज ऑल द प्रिपरेशंस विल नॉट हैव कंपेरेबल पोटेंसी और बायो अवेलेबिलिटी। देन वी आल्सो शुड बी नोइंग कि टीएसएच अगर किसी का ज्यादा है, नॉर्मल फ्री टी4 है, तो ये ऐसे इंटरफेरेंस भी हो सकती है। और अगर इसी तरह टीएसएच ज्यादा है और फ्री टी4 नॉर्मल है या लो है या इवन ज्यादा है, तो ये पोर कंप्लायंस से भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंटरमिटेंट एलटी4 इंजेक्शन। कभी लिया कभी नहीं लिया, और जिन दिनों डॉक्टर के पास आ रहे थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, उसकी वजह से क्या होगा, फ्री टी4 नॉर्मल होगा या हाई होगा, बट टीएसएच तो अभी भी हायर है। सो फर्स्ट थिंग वाज कि इनके हमने क्लिनिकल असेसमेंट कर ली। सेकंड इज इन्वेस्टिगेट द लैब इंटरफेरेंसेस। सो इसमें टीएसएच के ऐसे के इंटरफेरेंसेस भी हो सकते हैं और टी4 के भी हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स बट टॉक टू योर लेबोरेटरी पर्सन। सो इसमें जो है वो हमें ये याद रखना है कि जब भी आपका एनालॉग मेथड काम करता है वो इस तरह काम करते हैं कि देयर इज अ कैप्चर एंटीबॉडी लाइक दिस, देन देयर इज एन एनालाइट लाइक टीएसएच, एंड देयर इज अ डिटेक्शन एंटीबॉडी। उसके ऊपर एक सिग्नल है जो कि फ्लोरोसेंस ग्लो करेगा। इलेक्ट्रो कीमोलुमिनेसेंस एसेज जो है वो इसको ग्लो करता है। अगर ऐसे हुआ कि कोई ऐसी एंटीबॉडी जो कि इस पे लगे और वो ब्रिज करे बिटवीन द कैप्चर एंटीबॉडी एंड द डिटेक्शन एंटीबॉडी, वो इन दोनों को आपस में ब्रिज करे, तो एनालाइट तो बीच में था ही नहीं, टीएसएच था ही नहीं, तो देयर विल बी अ फॉल्स एलिवेशन ऑफ टीएसएच। तो ऐसा ये वाला एंटीबॉडीज के साथ ऐसे मिल जाए, इट कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ increased TSH, although there is no TSH in this. Similarly ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एंटीबॉडीज हो जो ब्लॉक करे इस साइट को, और TSH मौजूद हो, वो बेचारा लग ही ना सकता हो, तो this will result in a negative interference. There is also a phenomena called macro TSH assay interference. जाहिर है ये रॉश में तो नहीं होगा, ये सीमेंस वाले एसेज में होता है। जैसे मैक्रो प्रोलैक्टिन है, मैक्रो TSH इंटरफेरेंस, फिर इसको डाइल्यूट करना होता है। So you should exclude all the TSH assay interferences by talking to the laboratory, by TSH dilution, pegged precipitation, and all that. But one thing will always be a problem, that is biotin. Biotin is a water-soluble B complex, B7 भी इसको बोलते हैं। Dietary interference कर सकता है, dietary reference range इसका होता है 17 to 70 mcg। हाई डोज अगर किसी वजह से वो ले रहे हैं, बालों के लिए ले रहे हैं, किसी और वजह से ले रहे हैं, सो इट कैन रिजल्ट इन एसे इंटरफेरेंस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितने भी हमारे एसेज होते हैं उसमें एक बेस होता है, स्ट्रप्टाविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके ऊपर फिर एंटीबॉडीज आकर लगते हैं। तो बायोटिन आपने उसमें दे दिया, तो दो तरह के जो एसेज है, कॉम्पिटिटिव एसे और सैंडविच एसे। कॉम्पिटिटिव एसे में देयर विल बी फॉल्सली इंक्रीज्ड लेवल, एंड सैंडविच ऐसे में देयर विल बी फॉल्सली डिक्रीज लेवल। मजे की बात है, टीएसएच इज अ सैंडविच ऐसे, तो उसमें लो होगा टीएसएच, और फ्री टी4 और थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज हाई होंगे। सो अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर ग्रेव्स डिजीज। एक टीएसएच का कम हो जाना, फ्री टी4 का ज्यादा होना, ट्रैप का ज्यादा होना, आप कहेंगे इसको तो क्लियर कट ग्रेव्स डिजीज है, मरीज को कोई सिम्टम नहीं हो रहा है। ऑलवेज लुक फॉर बायोटिन। So after going through the assay interferences, then you consider कि raised free T4 हुआ है या raised free T
3 हुआ है या दोनों चीजें रेज हुए हुए और TSH अभी भी नॉर्मल है, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? जाहिर है रेज फ्री T4, रेज फ्री T3, ये सब कुछ। एमिड्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमिड्रॉन के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि if you know amidron, you know thyroid. It is just like if you know syphilis, you know medicine. तो एमिड्रॉन हाइपो भी कर सकता है, हाइपर भी कर सकता है, थायरोइडाइटिस भी कर सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस ड्यू टू इंक्रीज अपटेक भी कर सकता है, तो ये सब कुछ करता है। तो इस तरीके से वो हो सकता है फ्री T4 जो है सिर्फ रेज्ड और T3 इतना रेज्ड ना हो, बिकॉज वो कन्वर्जन नहीं करवा रहा, और TSH उसमें हो सकता है नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो। बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी का फ्री T4 T3 दोनों रेज्ड हो और TSH भी नॉन सप्रेसेबल हो, यानी कि रेज्ड हो, तो रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन स्पेशली बीटा जो रिसेप्टर्स है वो, या फिर TSH secreting adenoma thyrotrophinoma, these are the two important things you have to distinguish between them. It's difficult to distinguish between them on clinical grounds only. They both are rare and they have a very different manifestations. डिपेंड करता है किन रिसेप्टर्स पे ये लग गया। एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, डिफरेंट तरीकों से करते हैं वो। लाइक अल्फा सब यूनिट जो है वो रेज्ड होगा एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ द TSH। सो अल्फा सब यूनिट रेशियो बड़े हुए होंगे TSH में। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, किसी ने मुझसे ये सवाल पहले भी पूछा था, इट हैज लिमिटेड रोल। T3 suppression can actually differentiate, but unfortunately we don't have that. TSH response to IVTRH can differentiate, but unfortunately we don't have that. What we have a pituitary imaging, we can do that. 85 to 90% में तो हम डिटेक्ट कर लेंगे। इसके साथ साथ ट्रायल ऑफ SRL, आप जो है वो SRL देकर पता लगा सकते हो कि पिट्यूटरी एडिनोमा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। एंड अगेन जेनेटिक्स किसी तरीके से आ खान के थ्रू आप भिजवा सकते हो, 80% केसेस में वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इसको लुबे लुबाब में अगर हम ले ले तो वो यही है कि एलिवेटेड फ्री T4 T3 जब भी हो विद डिटेक्टेबल TSH, first you confirm this free T4 free T3 either by equilibrium dialysis which is not available, and then by either by a two step method। two step method का मतलब ये है कि उसमें डाइल्यूशन का भी फैक्टर हुआ और वो उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो भी निकल गई, ये लैब के जरिए ये हो सकता है। then you confirm this linearity of TSH assay in dilution, you exclude the confounding drugs, you exclude the intercurrent illness, फिर आप कहते हो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम अभी भी फ्री T4 T3 ज्यादा है, TSH भी ज्यादा है, तो थायरोट्रोफिनोमा और RTH जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मल्टीपल काम हो सकते हैं। आप जीन सीक्वेंसिंग करा सकते हो, जाहिर है वो म्यूटेशन होंगी इन द रेजिस्टेंस केस। SHBG मैंने कहा था ये दिस इज नॉट रिलायबल। और ASU अल्फा सब यूनिट टू अल्फा सब यूनिट TSH जो मोलर रेशियो है वो रेज्ड हो जाता है थायरोट्रोफिनोमा में। द TSH रिस्पॉन्स टू TRH इज exaggerated in the resistance case. Similarly, LT3 suppression टेस्ट कर सकते हैं जिसमें fully suppress हो जाएगा in the resistance case, and also response to depot SRL or pituitary adenoma. So this is the summary कि जब भी डिस्कॉर्डेंट TFTs आ जाए हमारे पास, रीइवैल्यूएट द क्लिनिकल हिस्ट्री, एज स्पेसिफिक कोई इश्यूज तो नहीं है, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कोई इश्यूज तो नहीं है, कंसिडर करे दैट। देन थायरॉक्सिन पे मरीज है तो कोई कंफाउंडिंग डाइटरी फैक्टर, मेडिकेशंस, या फिर कोई मैल एब्जॉर्प्शन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके साथ साथ नॉन कंप्लायंस। कुछ कंफाउंडिंग ड्रग जैसे एमिड्रॉन, हेपरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये कंसिडर करने हैं हमने साथ में, और इसके साथ साथ नॉन थायरॉइडल इलनेस। After all these things, then we go to assess the patient hypothyroid state में है, hyper है, या फिर euthyroid है, and which TFT is discordant, उस हिसाब से हम reconsider, उस हिसाब से करते हैं लैब से ऐसे interference, and in the last, once everything is ruled out, then we go to the rare genetic and acquired disorders. Thank you so much. Thanks to PES for giving me this opportunity. If you have any questions, you can ask now, because then after that I will be joining my clinic. Thank you so much, Dr. Matiullah Khan, for giving this wonderful talk. And in the question answer session, we are having one question by Rabia Aman. If the TSH values are due to drug, is this hold any clinical value, and we will consider the patient disease free? मुझे जरा डायरेक्टली खुद ही बात करे तो समझ जाएगा, इस तरह समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। प्लीज कैन You यू can see it from question answer session. Dr. Rabia, can you repeat your question?
डॉक्टर रबिया, थोड़ा आसान लफ्जों में बता सकते हो क्या पूछना चाह रही हो? डॉक्टर रबिया, आर यू विद अस? ही इज नॉट हियर। Mm, डॉक्टर जाहिद, अगर आपको समझ आए, मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा है। I think the question is whether if a patient is taking some drug and his thyroid function is abnormal. समझ आ गया। So वन ड्रग दैट कम्स टू माय माइंड इज, सॉरी आपको मैंने इंटरफेयर किया, कि वो बायोटिन। बायोटिन में जो है वो ऑब्वियसली यू होल्ड इट फॉर अराउंड 3 और 4 डेज, मैक्सिमम 1 वीक के लिए करो तो और अच्छा है। बायोटिन इंटरफेयर करता है एज अ ड्रग। दूसरे जो ड्रग्स है ना, दैट यू कैन नॉट होल्ड लाइक दैट। एमिड्रॉन को तो होल्ड नहीं कर सकते, वो तो कार्डियोलॉजिस्ट से yes, पूछ के हमें करना पड़ेगा। दो बातें। तीसरा ये है कि आप ये भी नहीं कर सकते हो कि आप ये कह रहे हो कि फ्री वाला करवा लो। वो फ्री को भी तो चेंज करेगा, एमिड्रॉन फ्री में भी प्रॉब्लम करेगा और चीजें भी करेगा। तो एक प्रॉब्लमेटिक ड्रग जो है वो एमिड्रॉन ही रह जाता है। बाकी तो ऐसे इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ बायोटिन ज्यादातर करता है, बाकी ड्रग्स इतने ज्यादा नहीं करते हैं। और बाकी सारे जितने भी ड्रग्स है वो वाले ड्रग्स है जो आप यूजुअली होल्ड नहीं कर सकते हो। टी के आईज है, वो ऐसे होल्ड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू गो विद इट, आप क्लिनिकली फिर उसके मुताबिक चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 50-year-old फीमेल, यू थायराइड स्टेटस, TSH is 6.3, नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। द फर्स्ट थिंग दैट इज, व्हाट इज इट कॉल्ड? पेशेंट जितना भी यू थायराइड हो, मगर उनका TSH तो 6.3 है। फ्री T4 करवाएंगे तो वो नॉर्मल है। नेक्स्ट थिंग वुड बी एंटी TPO एंटीबॉडीज करवाएंगे, इज इट ऑटो इम्यून और नॉट। और उसके साथ साथ इसको हम लेबल करेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो ये रास्ता है कि हम 2 महीने बाद रिपीट करवाए और देखें कि कितना उसमें फर्क आ रहा है। अगर फर्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, देन डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट। स्पेशली 7 से अबव जितने भी TSH होते हैं, वी शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ दैट। ये टॉपिक सारा जो है ना, बात चली जाएगी सब क्लिनिकल के बारे में ना, तो वो सब क्लिनिकली मैं समझाना शुरू हो जाऊंगा। बट सुरेश कुमार ने पूछा है तो मैं इसलिए ये जवाब दे रहा हूँ। थर्डली जो है वो द नेक्स्ट थिंग इज के, अगर आपका पेशेंट का वो TSH फ्लक्चुएट ही कर रहा है या लेबोरेटरी कहाँ से करवाया हुआ है, वो सारे चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। कई बार क्या होता है, किसी लोकल लेबोरेटरी में करवाया होता है 6.3, वो हम जब रिपीट करते हैं शफा से तो वो उस तरह नहीं होता है। सो ऑलवेज कंसिडर रिपीटिंग द टेस्ट। और उसके साथ साथ कोई कंफाउंडिंग फैक्टर था या नहीं था, उसके हिसाब से जो है वो करना है। और तीसरी बात ये कि उनके सिम्टम्स पूछनी है। जाहिर है ये सारी बातें कर रहे हैं नॉन प्रेग्नेंट, और वो जो प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जा रही है, और वो जिनको फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं है, और वो जो मेंसेस के इश्यूज नहीं हो। क्योंकि इन 4 ग्रुप्स में आपको सिर्फ बहाना चाहिए होता है थायरॉक्सिन स्टार्ट करने का। तो इन केसेस में जो है वो आप लाजमी जल्दी स्टार्ट करते हो। कोई अगर प्रेगनेंसी की तरफ जा रही हो, या फिर प्रेग्नेंट खुद हो, या फिर फर्टिलिटी के इश्यूज हो, या फिर उनको मेंसेस इश्यूज हो, फिर वो यू थायराइड नहीं देखते हो, फिर आप डायरेक्टली 6.3 पे स्टार्ट कर देते हो। लो डोज थायरॉक्सिन 0.8 mcg पर केजी के हिसाब से, जो 50 mcg की टैबलेट है उतना डोज उनका बन जाता है यूजुअली। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे 1 टैबलेट एंड सैटरडे संडे ऑफ करता हूँ। अब्बास अली शाह ने पूछा है हाउ मेनी डेज बी ऑफ बायोटिन। बायोटिन को 2-3 दिन में भी जो है वो ऑफ करके अच्छा रिजल्ट आ जाता है। मैं यूजुअली पूरा हफ्ता दे देता हूँ, बट 2 to 3 days आर इनफ फॉर इट। एनी अदर क्वेश्चन? there हाँ, is और Imran. राबिया ने फिर पूछा, यस ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल बायोटिन। हाँ ठीक है, वो तो मैंने जवाब दे दिया था। इमरानुल्लाह, अ पेशेंट ऑन थायरॉक्सिन फॉर लॉन्ग टाइम इफ डेवलप हाइपरथायरॉयडिज्म TSH, व्हाट टू डू थायरॉक्सिन? इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, इमरान। if she is on thyroxine and the patient TSH is suppressed, you have to reduce the dose obviously. First of all, आपने बहुत सारे इस तरह के पेशेंट देखे होंगे। वो हमारे पास जो है वो आते हैं और पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ था थायरॉक्सिन। पहला तो ये हमने पता लगाना है ना कि फ्रॉम वेयर द थायरॉक्सिन वाज स्टार्टेड। पहला TSH क्या था जिस पे स्टार्ट हुआ था। कभी कभी मुझे नहीं मिल रहा होता है, तो व्हाट यू डू इज यू कैन डू 2 थिंग्स। TSH किसी का सप्रेस्ड है और थायरॉक्सिन पे है, यू जस्ट होल्ड इट एंड देन रिपीट इट आफ्टर अ मंथ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। हाइपो इतना नहीं खराब करेगा इंसान को जितना हाइपर करता है। हाइपर से जो है वो आपका एफेब होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। नो, दिस इज ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस का एक हिस्सा बन जाता है। तो आपका प्रैक्टिस हो सकता है डिफरेंट हो, बट आई कैन जस्ट गिव यू व्हाट आई डू व्हेन आई नो कि यार इसका TSH पता नहीं कहाँ था जिस पे शुरू हुआ है थायरॉक्सिन। हो जाता है ना कभी कभी, किसी लोकल लेबोरेटरी में पता नहीं कोई किया था 8 का TSH था, किसी ने 3 गोलियां शुरू कर दी। तो नाउ यू हैव टू एक्चुअली स्टॉप इट। या फिर ये कर सकते हो कि स्टॉप करके 1 टैबलेट पे आकर फिर वो महीने 2 महीने बाद आप रिपीट करवा लो, एंड देन यू सी के उसमें क्या फर्क आता है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी याद रखें कि मेरे को 2-3 पेशेंट्स अब हो गए जिनको मैंने स्टार्ट किया था लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म ऑन अ प्रॉपर डोज, और वो चल रही थी बड़ी अच्छी। एकदम से अब TSH सप्रेस होना शुरू हो गया। अब मैंने वो बंद कर दी है थायरॉक्सिन, फिर भी सप्रेस्ड है। नाउ द पेशेंट हैज डेवलप्ड एक्चुअली ग्रेव्स डिजीज।
पहले उनको ऑटोइम्यून हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस था, अब ग्रेव्स था। एक और चीज ये भी है कि ग्रेव्स में भी दो तरह से वो बिहेव कर सकता है। बाय द थायराइड बाइंडिंग इनहिबिटरी इम्यूनोग्लोबुलिन के तौर पे जब वो प्रेजेंट करता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और जब वो स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज के तौर पे प्रेजेंट करते हैं तो वो हाइपर हो जाता है। तो ये भी बड़ा फिनोमेना है। आपने सवाल इतना अच्छा पूछा, अब उसके ऊपर डिस्कशन अगर शुरू हो गई तो बात सारी खत्म हो जाएगी। आई थिंक आई विल टेक अ लास्ट क्वेश्चन। तो आप बताएं जाहिद, कौन सा वाला सवाल? हुई इतने सारे सवाल आते तो मुझे We can go with Faiza Zuhair question. First, TSH low and T3, T4 normal. What is that? व्हाट इज दैट? TSH लो और T3 T4 नॉर्मल तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ मेरे ख्याल में। मेरी प्रेजेंटेशन दोबारा सुन लीजिएगा। दिस मींस कि सब क्लिनिकल हाइपर भी है, बट ये भी हो सकता है कि पेशेंट अभी न्यूमरकोजोल पे थे तो उसके बाद TSH अभी भी सप्रेस्ड है, T4 वगैरह नॉर्मलाइज हो गए हैं, या ये भी हो सकता है कि ये नॉन थायराइडल इलनेस है। दिस इज क्लियर कट केस जो मैंने ये डिस्कस किया था, आप दोबारा से ये सुन लीजिएगा। सही है जी। Okay, discussion is going a bit for long. I have one question, Dr. Matiullah Khan. यस। While dealing with T3 toxicosis and you start him on some numercazole, how will you monitor that patient? It is sometimes becomes difficult in clinical practice. How do you manage a T3 toxicosis patient in which T4 is normal and T3 is raised? एक्सेलेंट क्वेश्चन डॉक्टर जाहिद। एक्चुअली इसमें अब T4 भी मैं कराता रहूंगा, बट T3 भी दोबारा पर कराऊंगा। एक्चुअली होता क्या, ग्रेव्स डिजीज इज एक्चुअली इनिशियली प्रेजेंटिंग एज अ T3 टॉक्सिकोसिस। तो वो तरीकाकार होता है कि आप जो है वो उनको T3 को जो है बार बार देखते हो। T3 नॉर्मलाइज होते हैं तो आप न्यूमरकोजोल को कम करते हो। और वैसे भी T3 टॉक्सिकोसिस वाले मरीज में मैं या तो 2 गोली न्यूमरकोजोल से शुरू करता हूँ या एक से शुरू करता हूँ, और अगली बार ही वो एक में बदल जाता है और वो फिर नॉर्मलाइज ही रहता है। यूजुअली इतना चैलेंजिंग नहीं होता है। बट अगर आपने शुरू में डायग्नोज ही सही ना किया हो सकता है T3 टॉक्सिकोसिस था ही नहीं, उसको थायरोइडाइटिस था फॉर एग्जाम्पल, स्कैन नहीं करवाया था, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आप शुरू में जो है, इसीलिए मैं कहता हूं जब भी कोई हाइपर थायराइड की कोई प्रेजेंटेशन हो, उसको आप हमेशा प्लीज एक बात याद रखें आज के दिन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज नेवर कॉल एनीवन हाइपर थायराइड अंटिल इट इज प्रूवन हाइपर थायराइड। हाइपरथायरॉइड से पहले बोला करे थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस इज अम्ब्रेला टर्म, इट हैज हाइपरथायरॉइड थायरोटॉक्सिकोसिस, नॉन हाइपरथायरॉइड थायरोटॉक्सिकोसिस। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है, हाइपरथायरॉइड हो रहा है। दूसरे वाले में सिर्फ प्री फॉर्म्ड रिलीज हो रहा है। अब ये जब तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ ना, ये दोनों डिफरेंशिएट होते हैं थायराइड अपटेक स्कैन पे, जो कि टेक्नीशियन स्कैन। तो आपने शुरू में नहीं किया और आपने न्यूमरकोजोल शुरू किया ना, तो मरीज के साथ ज्यादती कर दिया अब आपने। अब आप जितने भी बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भेजोगे ना, वो अब हम कॉम्प्रोमाइज तरीके से चलाते रहेंगे। या तो एक हफ्ते के लिए न्यूमरकोजोल बंद करके दोबारा से हम स्कैन वैन सब कुछ करें, जो कि फिजिबल नहीं होते, या फिर आप शुरू में ही हमेशा गो फॉर स्कैन एंड देन डू योर ट्रीटमेंट। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस थायरोटॉक्सिकोसिस, डोंट ट्रीट। सिर्फ ट्रीट न्यूमरकोजोल से करके चीजें और खराब कर दोगे। सो अब वो डिपेंड करता है, T3 टॉक्सिकोसिस तो था, वो शुरू कहां से हुआ था? क्या वो थायरोइडाइटिस था जिसको किसी ने ट्रीट किया तो वो गलत हो जाएगा। अगर वो ग्रेव्स था या टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर था तो फिर तो सिंपल गोली से हम शुरू करके देन अगेन वी विल डिवाइड इनटू सेम फिनोमिना कि अगर वो ग्रेव्स है तो फाइनाइट ट्रीटमेंट है। और फाइनाइट ट्रीटमेंट मींस कि न्यूमरकोजोल हमने एक मुद्दत के लिए देना है और फिर बंद करना है 18 महीने बाद, एंड देन वी विल सी कि रिकर होता है या नहीं होता है। मगर ऑन द अदर हैंड दूसरा तो इनफाइनाइट है, टॉक्सिक नोड्यूलर, तो हम नॉर्मलाइज करके हम रेडियो एक्टिव आयोडीन की तरफ उसको ले जाएंगे। Thank you so ठीक है। much, Dr. Matiullah Khan. We are running out of time, and now I would like to invite our second speaker, Madam Amina Umer, is consultant endocrinologist, Jinnah Hospital, Lahore. Madam, over to you. Thank you, Dr. Zahid. Let me share the screen first. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you, PES, for providing me the opportunity to discuss on hypothyroidism. First of all, the learning outcomes are that by the end of this presentation, the participants will be able to describe the clinical manifestations of hypothyroidism and how to diagnose and manage hypothyroidism. The prevalence of overt hypothyroidism varies from 0.1 to 2%.
Hypothyroidism is 5 to 8 times more common in women than men, and the prevalence of subclinical hypothyroidism is higher, ranging from 4 to 10% of the adults, and with possibly a higher frequency in older women. The clinical manifestations are generally because of a generalized slowing of the metabolic processes, and this can lead to a number of abnormalities like fatigue, slow movement and slow speech, cold intolerance, constipation, weight gain, delayed relaxation of the deep tendon reflexes, bradycardia, coarse hair and skin, puffy faces, enlargement of the tongue and hoarseness, which is basically because of the accumulation of glycosaminoglycans in the interstitial spaces of the tissues. The skin can be cool and pale, sweating is decreased. There can be periorbital edema around the eyes. There can be a yellowish tinge to the skin, like in keratonemia. The hair can be coarse, hair loss is common, and the nails may become brittle. There can be a decrease in the cardiac output that is mediated by the reduction in the heart rate and contractility. There can be pericardial effusion. There can be diastolic hypertension. Patient have heart failure, angina may worsen. The patient can present with hypoventilation because of the respiratory muscle weakness, and patient can have sleep apnea. Patient can, because of decreased gut motility, present with constipation, and because hypothyroidism is mainly an autoimmune disease, it can have association with celiac disease, pernicious anemia, or non-alcoholic fatty liver disease. Women with hypothyroidism may have either oligo or amenorrhea, or hypermenorrhea or menorrhagia. They can present with decreased fertility or infertility, and there is increased likelihood for early abortion. And hyperprolactinemia may also occur with its clinical manifestations. Patient can present with neurological endocrine emergency, which is myxedema coma, and a patient can have carpal tunnel syndrome, but luckily it is reversible with treatment. Patient can present with weakness, cramps, and myalgias. Patient can have joint pains, aches, and stiffness. There can be an increased prevalence of hyperuricemia and gout, secondary to decreased renal plasma flow. This is the pictorial representation of symptoms of hypothyroidism, which has already been discussed. Now coming on to the workup of hypothyroidism, how do we diagnose a suspected case of hypothyroidism? In patients with symptoms or signs suggestive of hypothyroidism, the serum TSH is the initial test. And if it is elevated, the TSH measurement is repeated along with the serum free T4 to make the diagnosis of hypothyroidism. Then the patient can have either primary hypothyroidism, either subclinical hypothyroidism, or there can be either central hypothyroidism. Primary, which is characterized by a high serum TSH concentration with a low serum free T4 concentration. And in subclinical patients with a high serum TSH concentration and a normal serum free T4 concentration. In central hypothyroidism, it is characterized by low serum free T4 concentration and a serum TSH a concentration that is not appropriately elevated. Now, do we need to get the TPO antibodies done to ascertain the etiology of hypothyroidism? No, we do not routinely measure the TPO antibodies in patients with primary overt hypothyroidism because almost all have chronic autoimmune thyroiditis. We do get serum TPO antibodies in patients with goiter, especially in the absence of hypothyroidism, to identify immunologically mediated goiter. We get anti-TPO antibodies done in subclinical hypothyroidism, in painless silent thyroiditis, or postpartum thyroiditis. And why do we do it? We do it to predict the likelihood of progression to permanent overt hypothyroidism. Now, the screening for hypothyroidism, which is done with the measurement of serum TSH, is the candidates for such screening are all patients with symptoms of hypothyroidism, and in patients with lab or radiological abnormalities that could be caused by hypothyroidism, like hyponatremia, high serum muscle enzyme concentrations, macrocytic anemia, if the patient presents with pericardial or pleural effusion of uncertain etiology, patient with substantial hyperlipidemia or a change in the lipid pattern, patients with the risk factors for hypothyroidism, like previous thyroid injury, for example, radioiodine therapy, thyroid or neck surgery, external radiation therapy, patient with hypothalamic or pituitary disorders,
history of other autoimmune diseases, family history of thyroid disease, and a patient taking drugs that may impair thyroid function. In such patients, we do get a screening test with TSH done to look for hypothyroidism. Now, in pregnant women, screening for hypothyroidism is done in patients who have symptoms of hypothyroidism, who give history of recurrent miscarriages, morbid obesity or infertility, patient with a family or personal history of thyroid disease, pregnant patients with a history of thyroid peroxidase positive antibodies, patient with type 1 diabetes, head and neck radiation, and in pregnant women who are from an area of moderate to severe iodine deficiency. Our goals of therapy are obviously amelioration of symptoms, normalization of serum TSH concentration, avoidance of overtreatment, preventing iatrogenic thyrotoxicosis, and we aim to keep the serum TSH within the normal reference range, that is between 0.5 to 5 or between 0.4 to 4 according to some laboratories. Whom should we treat? We should treat all patients with overt hypothyroidism, which I've already mentioned, who are called overtly hypothyroid. And in patients with subclinical hypothyroidism, all patients with subclinical hypothyroidism who have a TSH above 10. In patients who have TSH between 7 to 9.9, we treat only patients who are younger than 65 years of age, or if the patients are older than 65 years of age, then we treat only those patients who have convincing symptoms. This was for TSH between 7 to 9.9. If the TSH is above the upper limit of normal to 6.9, then we don't treat patients who are older than 65 years of age because it is age appropriate for them. We only treat younger patients less than 65 years of age only if they have convincing symptoms. They have high titers of anti-TPO antibodies, or there is goiter. The treatment of choice is synthetic thyroxine, levothyroxine, and approximately only 70 to 80% of dose of oral thyroxine is absorbed, and its plasma half-life is long, which is about 7 days. Initial dose, average full replacement dose of T4 in adults is approximately 1.6 micrograms per kg per day. But in older patients or those with coronary heart disease, in whom the duration of hypothyroidism is unknown, should be started on a low dose, that is 25 to 50 micrograms daily. It should be taken on an empty stomach with plain water, ideally 30 to 60 minutes before breakfast. It should not be taken with other medicines that interfere with its absorption. For example, bile acid resins, calcium carbonate or ferrous sulfate, iron supplements. The patient with symptomatic improvement should be reevaluated, and serum TSH should be measured in 4 to 6 weeks. If the TSH remains above the upper limit of normal, then we have to see what is the level of TSH. If the TSH level is between the upper limit of normal and 10, then we increase the dose by 12 to 25 micrograms per day. We can also do weekly increments, as the half-life of thyroxine is 7 days, which is a week. We can increase it as weekly increments, like in cases when the TSH is less than 10, we can roughly increase the dose by 15%. For example, we can do this by increasing 1 day per week, by doubling the dose 1 day per week. Like if the patient is taking 100 micrograms daily from Monday till Sunday, then we can double the dose on Sunday. Like from Monday to Saturday, patient can take the same dose of 100 micrograms. And on Sunday, we double the dose. That is, we give the patient 200 micrograms per day. So we can either go with daily increments, or we can go with weekly increments. If the TSH is between 10 to 20, then we can increase the dose by 25 to 50 micrograms per day. And if the TSH is above 20 milliunits per liter, then we have to obtain a free T4 to guide dose increase. If the free T4 is half of the mean of the normal reference range of free T4, then we can actually double the dose of thyroxine. And if the free T4 is in the lower third of the normal reference range, then we can increase the dose by 20%. So this is important to, if the TSH on treatment 4 to 6 weeks after starting thyroxine, if the TSH is above 20, then we have to obtain a free T4 to guide the percentage increase in dosage. Exactly how much thyroxine do we need to increase.
If the TSH is normal 4 to 6 weeks after starting treatment, we continue with the same dose and we measure the TSH annually, but again, with any of the following conditions. If the patient develops new symptoms of hypo or hyperthyroidism, if the patient gets pregnant, if there is menopause, or before or ending any estrogen replacement therapy, new medication or condition that may alter the thyroid hormone absorption or metabolism, or if there is a weight gain or loss of more than 10%. It takes approximately 6 weeks before a steady state is attained after therapy is initiated or the dose is changed. This process of increasing the dose of T4 every 4 to 6 weeks should continue until the TSH returns to the reference range. So if there is increased dosing requirements in pregnancy, if there is a weight gain of more than 10% of the body weight, there is diminished thyroid hormone absorption like in celiac disease, there is increased thyroid hormone excretion like in nephrotic syndrome. So when to decrease the dose? If this, after we have started the patient on thyroxine, if the TSH is slightly below normal, that is, it is between 0.05 to 0.3 millionths per liter, a small reduction in dosage of about 12 to 25 micrograms per day is usually sufficient. For TSH values below 0.1 or below 0.05, it is again very helpful to measure the free T4 to assess the degree of overtreatment and appropriate percentage reduction in dose. Again, like if the free T4 it is twice the mean value of the normal reference range, then we have to actually halve the dosage of thyroxine. And if it is a patient is slightly above the free T4 is slightly above the upper limit of normal, then we can decrease the dose of thyroxine by about 20%. In young patients with long-standing overtreatment, a stepwise reduction in dose over 3 to 4 months might be better tolerated. Other patients which need a decrement in dosage are the patients with normal aging, weight loss of roughly more than 10% of the body weight, and initiation of androgen therapy. If the patient has possible hypothyroid symptoms and the serum TSH is confirmed by repeat measurement to be at the upper limit of normal or slightly above the normal reference range, then it is reasonable to increase the dose to aim for a serum TSH value in the lower half of the reference range to ameliorate the patient's symptoms. Persistence of elevation in TSH despite of treatment with thyroxine can occur with poor compliance or poor absorption of thyroxine like autoimmune gastritis or celiac disease. But persistent elevation with in patients with persistent elevation in TSH, poor compliance has to be made sure to should be confirmed. It should be confirmed that T4 is taken daily on an empty stomach with water. It is taken ideally before breakfast. It should be confirmed that patient is not taking any medications that interfere with T4 absorption. And if the patient is taking such medications, he or she is taking it several hours after the T4 dose. Now, the over-replacement with thyroxine can result in either subclinical hyperthyroidism or even overt hyperthyroidism, which can present with atrial fibrillation, especially in older patients with serum TSH concentration less than 0.1 millionths per liter, or it can result in accelerated bone loss. Then we come to special treatment situations like in older patients more than 60 years of age, patients with coexisting cardiopulmonary problems or patients with a history of coronary heart disease. They should be initially treated with a lower dose, like 25 to 50 micrograms of levothyroxine per day. The dose can then be increased by 12 to 25 micrograms per day, like in small increments, every 4 to 6 weeks until a replacement is complete as determined by normal serum TSH concentration. Now coming on to the management of hypothyroidism in pregnancy, obviously as already discussed by Dr. Matiullah, that there are certain physiological changes in pregnancy which demand for a higher dose of thyroxine. So pregnant women generally need more thyroid hormone during pregnancy. Approximately 75 to 85% of the women with pre-existing hypothyroidism need a higher doses of thyroxine during pregnancy to maintain normal TSH concentration. The increase in T4 requirements occurs as early as 5th week of gestation and plateaus by week 16 to 20. Now, there are two situations in pregnancy, like the patient is being newly diagnosed and she is being put on thyroxine, or the patient has pre-existing hypothyroidism.
So the pregnant patients who are not already taking thyroxine, the indications for treatment are TSH more than 4 millionths per liter if trimester-specific reference range is not available, otherwise above the trimester-specific reference range. And if the TSH is above 4 millionths per liter, then we have to get a T4 levels done. And if the T4 levels are normal, then the dose is usually 50 micrograms, 1 micrograms per kg daily. And if the T4 is below the lower limit of normal, then it has to be given in a dose of 1.6 micrograms per kg per day. And if another indication for treatment is a TSH between 2.6 to 4 millionths per liter, if the anti-TPO antibody is positive and there is a prior history of miscarriage. But in these situations, we have to start the patient on a low dose of thyroxine, like 15 micrograms daily. Then in pregnancy, we have to monitor the patients more frequently. After starting the patients on thyroxine, the TSH is measured every 4 weeks in the first trimester, and then once every trimester. And then dosage adjustments are made accordingly. Then if the patient has pre-existing treated hypothyroidism, our goal preconception TSH would be between lower reference limit and 2.5 millionths per liter. Newly pregnant patients should increase their dose by 30%. And generally how it is achieved, it is achieved by doubling the dose of thyroxine around twice, 2 days per week. Then generally it gives an increment of 30% of the dosage. The dosage should be reduced to pre-pregnancy levels after delivery, and after delivery, and the TSH measurement should be done 4 to 6 weeks later. So this was all about the diagnosis, and management of hypothyroidism. Now, there are certain poorly compliant patients who do not take their T4 regularly and do not respond enough to efforts to improve compliance. These patients may be given their total weekly dose of T4 once per week. So thank you so much. This was all about hypothyroidism. And thank you so much. Thank you all for your patient listening. Now over to Dr. Zahid. Thank you so much, ma'am, for having such a wonderful talk on hypothyroidism. There are a few questions in this regard, and they are present on the screen. And there is Dr. Parvez Hanif, and the question is, discuss the challenges in accurately diagnosing central hypothyroidism, which arises from dysfunction at the level of hypothalamus or pituitary gland, and differentiate it from primary hypothyroidism. Can you please repeat the question? Discuss the challenges in accurately diagnosing central hypothyroidism, which arises from the dysfunction of level of hypothalamus or pituitary gland from primary hypothyroidism. Okay, thank you. This was already discussed by Dr. Matiullah, but again, in primary hypothyroidism, we have we are talking about overt hypothyroidism. The patients present with a low T4, PT4, and an appropriately raised TSH level. But in hypothalamic or central hypothyroidism, like in hypothalamic or pituitary gland disease, the patient has a low T4 with an inappropriately elevated TSH or even a normal TSH. So this is how we differentiate between a central and primary hypothyroidism. And there is Najia Khan asking a question: how much maximum thyroxine dose a patient can take per day? There is no upper limit to the maximum dose of thyroxine a patient can take, but obviously our goal is again amelioration of symptoms and keeping the TSH in the normal reference range. That doesn't matter how many tablets of TSH a thyroxine patient is taking, but the main goal is keeping the TSH in the normal reference range. But if despite increasing and escalating the dose to very high levels, if the patient is not responding, then obviously you have to think of, like Dr. Matiullah has already discussed, we have to think of thyroid hormone resistance or malabsorptions or poor compliance. But generally, there is no upper limit for of how many tablets can be taken to normalize the serum TSH concentration. Ma'am, one question Dr. Amir Chaudhary is asking, can we take thyroxine at night?
Ideally, it should be taken before breakfast on empty stomach, because ideally there should be a long gap between the food intake or any other medicine intake before. But generally, some patients who cannot take because of unknown reasons, who cannot take it in the morning, they can take at night. But because there is not much gap between the meals and the intake of thyroxine, they do present with the problems of they're not properly treated then. So better to take breakfast. I don't know if there is any patient who has difficulty in taking who has any problem with taking the thyroxine before. In Ramadan, we can have such problem that the patient cannot manage to take thyroxine 1 hour before seher. But obviously, patient can take it, but there should be a large gap of at least 4 to 6 hours before between the meal or the other medicines and the thyroxine replacement, thyroxine tablets. Thank you so much, ma'am. I have one question. In the clinical practice, if a patient is finding difficulty in taking medicine on regular daily basis, what is your experience in administering drugs in at other regimes, like once weekly regime or other ways, collective dose? Obviously, we have to tailor our management decisions based on patient's comfort, and it should be patient friendly. We have seen that patients who are non-compliant with medicines being taken regularly, they can, if they take the medicine once a week, and it should be supervised or observed in front of either the doctor, clinician, or any family attendant, there is the compliance gets improved, and that we have seen that the TSH returns to the target range, the normal reference range. So better to take than to just miss the doses. But obviously, there is a problem that we cannot just omit that single dose of thyroxine, because it is if the patient is taking weekly, because it would make a major difference then. So better if the patient takes daily, but if there are compliance issues or any other issues, it has got equally good results if the patient take it on a weekly basis, but better to take it in front of the clinician or any family attendant. Thank you so much, ma'am. To all the participants, this whole presentation is available in recording form and will be available to the participants. I would like to conclude the session, and would thanks Pakistan Endocrine Society for providing the opportunity to the participants. Thank you very much who participated in this program. Hand it over to the host.